Good morning, everyone. Welcome to today's class. Today we are going to reading about class ninth chemistry, chapter number 1. Okay, we will discuss about chemistry, the language of chemistry chapter in English as well as in Hindi. Okay, now let's see. Introduction. Chemistry. Introduction. Okay, chemistry is a branch of science in which we study about matter. What is matter made of? What is its nature, structure, and what changes are observed when it is subjected to different conditions. As we all know about matter, what is matter? Anything which has mass, which occupies some space, is called matter. We already studied it in our earlier classes in class 6, 7th, 8th, 9th. Okay. Now, here chemistry is a part of science in which chemistry is dealing with matter, and matter is made up of what? We are going to know matter is made up of what and what is its nature. Nature of matters. As we all know different types of matters in the earth, we are going to know about the basic building blocks of all matter and what all matters nature have and are made up of, and its structure also. Different matters have different types of structure due to some chemical reactions. So we are going to know about the structures and natures of matter and what changes are observed when it is subject to different conditions. And also we are going to know about when we kept some matter in different conditions, how they are going to react and change in our day-to-day life. So we can know about chemistry in details, and in this chapter we are going to know about matter, how matters are formed, nature of matter, matters are made up of different parts, what are they, and how the symbols, elements, and details about it. So now let's talk it about in Hindi. Okay, chemistry is a branch of science in which we study about matter. तो केमिस्ट्री एक साइंस का ब्रांच है जो केमिस्ट्री में, इस साइंस का ब्रांच जो केमिस्ट्री है वहां पे हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं? मैटर के बारे में। और जो मैटर है वो कैसे बना हुआ है, किससे बना हुआ है, नेचर में कैसे मिलता है, मैटर का स्ट्रक्चर कैसा है। जब भी बहुत सारे टाइप्स के मैटर्स हैं और जब भी हम उन मैटर्स को डिफरेंट कंडीशंस में रखते हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या क्या देते हैं, और मैटर्स कैसे तैयार होते हैं, मैटर किससे बना हुआ है, कितने टाइप्स के मैटर हैं। तो आप सब लोग पढ़े होंगे क्लास 5th से 6th, 7th, 8th, 9th में कि मैटर इज मेड अप ऑफ व्हाट? टाइनी पार्टिकल्स एंड ये सब के बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे कैसे बना हुआ है। और मैटर का डेफिनेशन भी आप लोग पढ़े होंगे, क्या है? एनीथिंग विच हैज मास एंड विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, तो ये सब डेफिनेशंस आप पढ़े हो। तो अभी क्या करेंगे, हम इस चैप्टर में मैटर्स के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। मैटर किसे बोलते हैं? जैसे कि हम भी एक मैटर है, ये पेन भी एक मैटर है, डिजिटल बोर्ड भी एक मैटर है, आपके सामने रहने वाला बुक भी एक मैटर है, और आपका टीचर भी एक मैटर है, आपके क्लासरूम भी एक मैटर से ही बना हुआ है, और जितने भी सारे दुनिया की चीजें हैं ये सभी मैटर से बने हुए हैं। तो मैटर किससे बना हुआ है, ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे और समझेंगे, जो कि हमारे लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और उसके बिना हम नहीं रह सकते, नहीं बन सकते। मैटर से हम लोग बने हैं, तो चलो उसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं कैसे बनता है। Many theories were proposed regarding matter which help us to discover the real essence of matter. As we all know, many scientists are there who explain about matter and discovers many secrets about matter. So we are going to know about that secrets of scientists that they written and experimented in their daily life. So let's see. चलो, बहुत सारे साइंटिस्ट लोग ऐसे हैं जो कि मैटर्स के बारे में रिसर्च किए हैं और एक्सप्लेन भी किए हैं और बुक्स में भी लिखे हैं, और उनके हेल्प से हम लोग मैटर के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। चलिए,
The basic unit of matter in any state is considered as molecules. तो अभी हमें क्या पता चला कि मैटर का बेसिक यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ मैटर इन एनी स्टेट, कोई भी स्टेट में, तो वो क्या है? मॉलिक्यूल्स. ओके, एज वी ऑल नो, scientists were explained about that the matter's basic state, how matters are made of the basic states of matter, that made is called molecules. Okay, this is because a molecule is the smallest particle of matter which is capable of independent existence. So matter, in matter there are some molecules, they are smallest particles of matter and they can stay independently also. तो मैटर का एक छोटा सा यूनिट है मॉलिक्यूल, जो कि इंडिपेंडेंटली रह सकता है. तो ये था मैटर का मॉलिक्यूल्स का डेफिनेशन. जिन लोगों को मॉलिक्यूल का डेफिनेशन याद नहीं है, प्लीज इसको बाय हार्ट करिएगा. दोज हु डोंट बाय हार्ट द डेफिनेशंस ऑफ मॉलिक्यूल, प्लीज बाय हार्ट इट. लेट्स सी. A pure substance is one which is made up of molecules containing the same kinds of atoms. So, whenever you thought about pure substances, whenever you think about pure substances, then you have to know, you already know that the molecule is made up of only one type of atoms only. Then that is called pure substance. सो इसका मतलब क्या है? हम प्योर सब्सटेंस किसे बोलेंगे? जो भी मैटर का चीज, जो मैटर में मॉलिक्यूल्स है, वो एक ही टाइप्स के एटम से तैयार हुआ है, बना हुआ है, तो उस टाइप्स के मॉलिक्यूल्स को हम प्योर सब्सटेंस बोलेंगे. सेम काइंड्स ऑफ एटम्स, एक टाइप के एटम से ही जो मॉलिक्यूल तैयार हुआ होता है. अंडरस्टूड? Whenever you see about pure substances means the matter or the molecule that are made of same types of atoms only, then that is called pure substances. Okay, all the molecules of it are made up of 2 oxygen atoms and 1 carbon atom, then that is called carbon dioxide. For suppose I am explaining about it in a diagram so that you can, it will help you to understand in a better way. Okay, let's see. Let's suppose 1 carbon and 2 oxygen is a molecule. A pure substance means if it is made up of only carbon dioxides, 1 carbon of atom and 2 oxygen atom, 1 carbon atom, 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 2 oxygen atom, then that is called a pure substance. Now I hope you all understood about pure substance. Let's see about next topic and what are the. Yeah, a molecule may contain similar atoms or dissimilar atoms. Remember, pure substance means same types of atoms, then that is formed, then that which we form is called pure substance. जब भी सेम टाइप्स ऑफ एटम्स से मिलके कोई भी सब्सटेंस तैयार होता है, तो मॉलिक्यूल तैयार होता है, तो उसे प्योर सब्सटेंस बोलते हैं. पर मॉलिक्यूल कैन बी इन ए डिफरेंट, कैन बी फॉर्म बाय डिफरेंट एटम और सेम एटम्स. सेम एटम्स से भी मॉलिक्यूल तैयार होता है, डिफरेंट एटम्स मिलके भी मॉलिक्यूल तैयार होते हैं. तो सेम एटम्स मिलके जो मॉलिक्यूल तैयार होता है उसे हम एलिमेंट बोलेंगे. डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिलके जो एटम तैयार होता है और मॉलिक्यूल तैयार होता है उसे हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड. ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होएगा, आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं एक एग्जांपल की हेल्प से. देखिए, ये रहा एलिमेंट. एलिमेंट को कैसे पहचानेंगे? और यह रहा कंपाउंड.
कंपाउंड को कैसे पहचानोगे? This is element and this is the compound. How will we identify or know about element and compound? For suppose, elements are made up of only same types of atoms. For like hydrogen, 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 hydrogen. For suppose, all the atoms in this box are hydrogen. Same types of atoms are together in a particular place, then that is called hydrogen element. Okay, it is an hydrogen element. Like this, in a box, if same types of atoms like oxygen, 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 all these are oxygens, same types of atom at together with, then they are called oxygen element. Okay, so let's come to know about compound. For suppose I brought one hydrogen from here, then I brought another oxygen from here, then again I brought another hydrogen from here. So if we see, when two hydrogen, one oxygen react together, they form a molecule that is called water molecule. And this water molecule, whenever same types of molecule together at a particular place, then they form a compound. Whenever same types of molecule at a particular place, they form compound. Then what is this called? I hope you all know this is called water compound. I hope you all understood about it. So let's explain it in Hindi. Element. एलिमेंट माने कौन? इन हिंदी एलिमेंट का मतलब क्या है? जब भी सेम टाइप्स ऑफ एटम, सेम टाइप के एक टाइप के एटम्स मिलते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं मिलके, तो देन उनको हम क्या बोलेंगे कि कलेक्शन क्या, एक ही टाइप का एटम का कलेक्शन हुआ, तो इसे क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोजन एलिमेंट, जहां पे सेम टाइप्स ऑफ एटम रहते हैं। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है, सिर्फ ऑक्सीजन का एटम है, एक टाइप का एटम कलेक्ट हो गए हैं यहाँ पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन का एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट। वैसे ही जब मॉलिक्यूल्स, यहां से मैं क्या किया ना, दो हाइड्रोजन को लिया और एक ऑक्सीजन को लिया और तीनों को केमिकल रिएक्शन में मिक्स कर दिया, तो हमें मिला वाटर का मॉलिक्यूल। ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये से एक टाइप का मॉलिक्यूल है। जब बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स एक जगह पे इकट्ठा हो गए, टुगेदर मिलके रहेंगे, तब उनको हम क्या बोलेंगे? वाटर कंपाउंड बोलेंगे। आप लोग को समझ में आया होगा, जब भी सेम टाइप्स ऑफ एटम एक पर्टिकुलर प्लेस में रहते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट भी बोलेंगे। प्योर सब्सटेंस अलग है, उसको छोड़ दो, अभी एलिमेंट को समझो और कंपाउंड को और मॉलिक्यूल को समझो, ठीक है? तो ये जो हाइड्रोजन एलिमेंट है, वैसे हम नाइट्रोजन एलिमेंट भी बना सकते हैं, जहां पे सिर्फ नाइट्रोजन एटम्स रहेंगे, ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम together at a particular place, then they are called element. Okay, तो यहाँ पे बहुत सारे नाइट्रोजन एलिमेंट, सिर्फ नाइट्रोजन एलिमेंट्स भरा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन एलिमेंट ही बोलेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन एटम्स है। सिर्फ हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन एलिमेंट, सिर्फ ऑक्सीजन एटम है तो ऑक्सीजन। जब भी ये दो सेम एटम और डिफरेंट एटम मिलते हैं, तो वो क्या तैयार करते हैं? मॉलिक्यूल। जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वाटर मॉलिक्यूल तैयार किए हैं। जब ये वाटर मॉलिक्यूल, बहुत सारे सेम टाइप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को हम एक बॉक्स में इकट्ठा करेंगे, तो वो क्या बनेगा? वाटर कंपाउंड। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड, अगर यहां पे इरेज करो नेक्स्ट पेज, अगर यहां पे बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इकट्ठा हो गए एक जगह पे, तो इसे हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का कंपाउंड है, कंपाउंड ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या समझने के लिए बचा है। बहुत सारी चीजें हैं, तो हम अभी डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट्स सी डेफिनेशन लाइक व्हाट या it is the definition of element. Okay, an element is a simple and pure form of matter which cannot be decomposed into simpler substances. So matter, the purest form of matter is element. We cannot further break down an element. It is the simplest form of atom or matter. Let's suppose, so at present there are 118 elements known to us. As we all reading in our in class 6th, 7th and 8th, 9th, all the elements are till now 118 elements are identified by the scientists. So, and these 118 elements are further divided into metals, non-metals, metalloids and noble gases. You all read it in your previous class. I know you all know about it properly. So let's see. Make up the majority of the non-mass of the universe with all the other elements making up only 1% of the mass. All elements are made up of atoms, the smallest particle of an element which represents all the properties of an element. The smallest unit of element, smallest part of state of or unit of element which represents all details about a one element, then that is called atom. An atom is means the elements atoms who explain and gives details about the atom. Only the atom can give details about a single element. For suppose oxygen elements. So an oxygen have all the natures and characteristics of oxygen elements. So like that, an atom is the smallest particle of an element which may or may not exist independently but can take part in a chemical reaction. So an atom is the smallest particle of an element which may or may not exist independently. Atom never exists independently. It always find its way to be stable. So never ever, atom never ever stay independently, but can take part in chemical reaction. Always try to take part in a chemical reaction and to be paired and be stable. As we all want to stable in our life, atoms are also like to stable in their life. So they are always ready to take part in a chemical reaction and never stay independently in their life. So let's see. Let's talk about. Let's explain it in Hindi. एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स है वो इसका डेफिनेशन देख लीजिए यहाँ पे। एन एलिमेंट इज ए सिंपल एंड प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर का सिंपल और प्योर फॉर्म जो है वो एलिमेंट है। वो उसको फर्दर और सिंपल पार्ट में हम उसको कट और डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल पार्ट हुआ। अभी तक दुनिया में 118 एलिमेंट्स पाया गया है, साइंटिस्ट डिस्कवर किए हैं। वही 118 एलिमेंट्स को आप सब लोग पढ़े होंगे कि चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड एंड नोबल गैसेस। और ये जो एलिमेंट्स है इनको ऐसे डिवाइड किया गया है और फर्दर डिटेल्स हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, एलिमेंट्स तो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स का प्योरेस्ट फॉर्म। तो एलिमेंट, एक एलिमेंट की डिटेल्स हम कहां पे मिलेगा हमें एक एलिमेंट का डिटेल्स? एक एटम में। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। एटम may not exist independently in a nature, it always ready to take part in a chemical reaction। तो एटम कभी भी नेचर में इंडिपेंडेंटली नहीं रहता है, वो हर वक्त क्या करता है? केमिकल रिएक्शन के लिए वेट करता है, क्योंकि उसको उसके लाइफ में स्टेबल होना है। तो सभी केमिकल रिएक्शन में एटम पार्टिसिपेट करता है। और याद रखिएगा, एलिमेंट का सबसे छोटा यूनिट एटम। ओके, a set of atoms of the same type together forms the molecule। सेम टाइप ऑफ एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, आप लोगों को समझा दिया था। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स भी मिलके भी मॉलिक्यूल बनाते हैं।
तो molecules of atom is called its atomicity. The number of atoms in a molecule of an element, मॉलिक्यूल के एलिमेंट में जितने भी सारे एटम्स है उसको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिसिटी. द नंबर ऑफ एटम्स इन एन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इन दैट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट. Molecules can be monoatomic, diatomic, and even polyatomic. So molecules, let's see about molecule. Molecules are further divided into three parts: monoatomic, diatomic, and polyatomic. Monoatomic molecules, elements having only one atom in their molecules, noble gases, neon, argon, krypton, xenon, and radon have one atom each in their molecules. So the atomicity of noble gases is 1. The atomicity of metal elements like sodium, potassium, magnesium, copper, it is also taken as 1. The atomicity of element carbon is also 1. Those noble gases, metals, and carbon are monoatomic molecules. So here we are going to know about what do you mean by monoatomic. Monoatomic means an element or a molecule in which only one atom is there. The many examples of monoatomic are in the form of noble gases and some metals like sodium and non-metal like carbon. So these are all monoatomics. Okay, let's suppose we are going. I am explaining you in Hindi. An element having only one atom in the molecules. मतलब कोई भी एटम है जिसके मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ एटम है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोएटॉमिक. बहुत सारे नोबल गैसेस हैं जिनको हम मोनोएटॉमिक बोलते हैं. सभी नोबल गैसेस मोनोएटॉमिक रहते हैं क्योंकि वो वन एटम से बना हुआ है. और कुछ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी हैं, उनमें से सोडियम एक मेटल है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, ये सब मेटल्स मोनोएटॉमिक है. इसका मतलब क्या, सिंगल एटम से बने हुए हैं. और मॉलिक्यूल्स का मतलब और कुछ मॉलिक्यूल भी है मोनोएटॉमिक जो कि नॉन मेटल है, जैसे कि कार्बन. ठीक है, मोनोएटॉमिक का मतलब समझ में आया. मोनोएटॉमिक के अंदर कौन कौन आते हैं समझ में आया. लेट्स सी diatomic molecules. Molecule elements having two atoms in their molecules. So let's see, if there are two atoms in a molecule, then that is called diatomic. Example of diatomic molecules are hydrogen, oxygen, nitrogen. डायएटमिक मतलब जो भी मॉलिक्यूल में दो एटम रहते हैं उनको हम डायएटमिक बोलते हैं. उनका एग्जांपल है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. ट्राइएटमिक मॉलिक्यूल्स मतलब वो लेट्स सपोज जिस भी मॉलिक्यूल में तीन एटम्स रहते हैं, देन दैट इज कॉल्ड ट्राइएटमिक. फॉर एग्जांपल ओजोन. ओके, example ozone. Triatomic means a molecule having three atoms in it, then that is called triatomic, and the example of triatomic is ozone. Okay, tetraatomic molecules, elements having four atoms in their molecules. Let's suppose if a molecule in which there are four atoms, then that is called tetraatomic molecules, and the example is phosphorus. tetraatomic molecules का मतलब ये है कोई भी एटम है मॉलिक्यूल है जिसमें चार एटम से वो मॉलिक्यूल बना है, तो उसे हम टेट्राएटॉमिक बोलते हैं. उसका एग्जांपल है फास्फोरस. वैसे ऑक्टाएटॉमिक मॉलिक्यूल्स मींस एलिमेंट्स हैविंग 8 एटम्स इन molecules having 8 atoms in its atom in there, then that is called octaatomic molecules, and the example of octaatomic molecule is sulfur. So a molecule is the smallest particle that has the capability of exist independently. The molecule of an element exhibits all the properties of that element. So let's see, molecule is the smallest particle which has the capacity to stay independently, and it shows all the properties of the elements of atom that are made up of. Okay, so here we complete the molecules, definitions of molecule and different types of molecules, and further we will discuss it about details in the next class. Let's explain me in it all in Hindi. टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब है
जो भी एक मॉलिक्यूल है जिसमें 4 एटम से वो मॉलिक्यूल बना हुआ है, उसका एग्जांपल है फास्फोरस। ऑक्टाएटॉमिक मतलब एक मॉलिक्यूल है जो कि 8 एटम से बना हुआ है, 8 एटम से, और उसका एग्जांपल है सल्फर। सो मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल क्या है? मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, पार्ट है, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, और जो वो मॉलिक्यूल है वो सभी जो 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 एलिमेंट्स से वो मॉलिक्यूल बना है, एलिमेंट्स के एटम से, वो सभी का प्रॉपर्टीज वो मॉलिक्यूल शो करता है। यहां तक हम डिटेल्स में पढ़े हैं मॉलिक्यूल के बारे में। तो अभी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और इनके बॉन्ड के बारे में, कैसे सिंबल्स तैयार होते हैं, सभी एटम्स कितने एलिमेंट्स हैं, उनका सिंबल क्या है, इनके बारे में डिटेल्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप सब लोगों को क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।